Religare. Some of you know. Those who are joining us for the first time, I'll brief the flow of this presentation. So basically, we start with a quick recap of the passing week, followed by the focus mainly on the key indices, benchmark indices, sectors to focus on, and stocks which should be on your radar for the next week. So we cover everything in next 20 minutes, followed by the Q&A session. So there's a Q&A button in front of your screen. You can use that during the Q&A round to ask your question in case if you wish to know anything about any particular theme, any sector. If time permits, we'll take few stock specific queries also. सो आप सभी का स्वागत है इस वेबिनार में, और इस वेबिनार का मेन पर्पस क्या है कि आप नेक्स्ट वीक के लिए तैयार रहें। चाहे मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, किस तरीके से मूव्स प्लान हो सकते हैं, कौन से लेवल्स ध्यान पे रखने हैं, ये सारी चीजें हम बात करेंगे नेक्स्ट 20 मिनट में। उसके बाद कोई भी सवाल है आपका रिलेटेड टू प्रेजेंटेशन जो हमने बात की, उसके बारे में, कोई सेक्टर मिस किया है उसके बारे में, कोई थीम जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, और टाइम अगर परमिट करेगा तो हम स्टॉक स्पेसिफिक भी कुछ क्वेरीज एड्रेस करेंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद अ डिस्क्लेमर फर्स्ट दैट it's not a trading or an investment recommendation, so it's basically the observation which we have on markets. So before you make any decision based on the information shared, please do check with your financial advisor. तो जो भी हम बात करने वाले हैं कोई ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है। तो जब भी आप कुछ प्लान करें, इंफॉर्मेशन जो हम शेयर करने वाले हैं उस पर, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात करें। सो दिस इज हाउ द मार्केट लुक लाइक, sharp cut, 2.5%. Why I'm saying sharp in comparison to what we were seeing in last 5-6 weeks, it's comparatively larger cut. Means in the last, in fact, 7-8 weeks, whatever gain that we had, market have surrendered everything. Right, we are back to the square, and that clearly reflects in the sectoral move also. So all sectors on the weekly basis ended on a losing side, with energy, metal, media, realty, auto were among the top losers. Talking about the Nifty 50 constituents, Titan, Bell, ICICI, iSure, Asian Paints, they could manage to post decent gains in the range of 2 to 4%. But trend after this recent attempt of recovery plunged sharply, lost roughly around 10%, followed by Reliance Industries, HDFC Bank, Adani Enterprise, Indigo. So two of the heavyweights in the index, Reliance Industries, SDFC, were among the top losers this week, and that's the reason why we are seeing this carnage in the market. तो देखिए, जो ये हफ्ता था, ये पिछले 7-8 हफ्तों के एकदम परे। गिरावट पहले भी हुई है, बट इस तरीके के फॉल मार्केट ने नहीं देखा था। मतलब मार्केट क्या दिखा रहा था, फॉल करीब 0.5% का फॉल, 1% का फॉल, बस यही एक चीज कंटिन्यू हो रही थी काफी टाइम से। बट इस डिक्लाइन ने अपने पिछले 7-8 हफ्ते के जो भी गेन्स थे वो हम सारे सरेंडर कर दिए मार्केट ने। मतलब 25,600 के लेवल आज हमने टेस्ट किए निफ्टी में, और उसके बाद ये बाउंस जरूर देखा, बट टोन नेगेटिव रहा अक्रॉस द बोर्ड, जैसा कि सेक्टोरल फ्रंट के मूव्स नजर आ ही रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जैसे कि लूजर्स आप देखेंगे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज और एचडीएफसी बैंक, साथ ही साथ आईटीसी जो कि लास्ट वीक का टॉप लूजर्स था, ये कुछ एक बड़े नाम रहे जिनमें काफी शार्प डेंट देखने को मिला, राइट। सो ये तो रहा पूरे वीक का लेखा जोखा, एंड सिमिलर स्ट्रक्चर शायद थोड़ा ज्यादा ही व्हेन इट कम्स टू द ब्रॉडर मार्केट्स, मिड कैप, स्मॉल कैप, दे हैव आल्सो एंडेड ऑन अ नेगेटिव नोट. So this is how the Nifty looks like on the daily chart right now, right? ऐसा दिख रहा है निफ्टी अभी आपका ये डेली चार्ट पे. Earlier we were using slightly
broader time frame. This time I'm using it selectively, uh, keeping in mind the importance of the current levels and the level which are very closer to the current area. So as you can see that this green line on your screen, that's 100 EMA. In the last instance when we were seeing recovery, right, since this is August month low, right, last year August month low. So every time we penetrate this 100 EMA, we could manage to see a recovery, and we are retesting that. We have retested that zone rather in today's trade. 25,600 was close to that level, is something that Nifty has already tested. We were trading in a rising channel, right? As you can see here, 25, 850, 800. If you remember last time, we were discussing about that area as a critical support with the potential target of 26, 500, 700. But it turned out to be otherwise, means we have breached this previous swing low, the lower band of this rising channel, and tested the 100 EMA as well. So this area 25,600 is now the critical support to watch out for in the coming week. If Nifty fails to hold, then probably we are set for this previous swing low around 25,300 and then this 25,150, the long-term moving average 200 days. तो देखिए ये अभी तक निफ्टी में क्या हो रहा था ना कि ये जो मैं बार बार कह रहा था कि गिरावट भी हो रही है, तो कोई ऐसा चैलेंजिंग नहीं था, बिकॉज आप प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक नहीं कर रहे थे इस बार, बट वो चीज हो गया. मतलब मैं जस्ट दोबारा से रिमाइंड कराने के लिए, ये लो, ये लो, ये लो, हर लो प्रीवियस लो के हायर था. इस बार क्या किया हमने, उस लो को ब्रेक कर दिया और फिर ये हमने प्रेशर देखा मार्केट में पिछले 2 दिनों में. तो अभी क्या है, अभी ये 100 EMA कॉस पास्ट 3-4 इंस्टेंस में जितनी बार भी हम उसके नीचे गए हैं तो फिर मार्केट ने एक रिकवरी दिखाई है, राइट. तो अभी देखना है कि ये 25,600 के नीचे जाके क्या करता है बाजार. अभी तो क्या दिख रहा है कि अगर 25,600 के नीचे हम स्लिप करते हैं तो फिर 25,300 वाला जोन खुल जाएगा जो कि प्रीवियस स्विंग लो था, और उसके बाद लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज जो करीब 25,150 पे प्लेस्ड है, राइट. अब रिकवरी के केस में व्हाट इफ वी सी अ रीबाउंड in the following session, so this zone 26,000, as you can see, this extension support which was earlier acting as a support might act as a resistance now, and this 20 EMA mark is largely coincides with the same zone. So to reclaim 26,000 mark, sustain above this level is going to be slightly tricky. On the higher side, if we manage to surpass this level, then obviously 26,200, 300, that would be the next major resistance for the market. So as of now, the market from buy on dips has turned to sell on rise. तो अभी तक जो हम बात कर रहे थे पिछले कितने ही टाइम से कि ये बाय ऑन डिप्स की मार्केट है, जब तक कि लोज ब्रेक नहीं हो रहे हैं, तो ये फाइनली अब ब्रेक हो गया है. जो मोमेंटम था, जो ये ट्रेंड था, वो कहीं ना कहीं वीक हो गया है. इसका मतलब ये नहीं है कि आउटराइटली आप सब कुछ बेच के निकल जाएं, वो वाली सिचुएशन नहीं है. बट यस, जिस तरीके से हम देख रहे थे कि मार्केट में होता क्या था सिंस अगस्त की, एक तेजी आती थी, उसके बाद 70%, 80% तक उसका मूव को रिट्रेस कर देते थे हम, राइट. यहाँ से तेजी आई, हम गए यहाँ तक, और फिर देखा कि ज्यादा सारे गेन्स हमने रिट्रेस कर दिए. यही चीज चलती आ रही थी. तो अभी तक सिचुएशन यही है कि एक लेकलस्टर सा ही इसको हम कहेंगे मूव, जो कि अभी अनफोल्ड हो रहा है. 25,600 को आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट वीक के लिए. जब तक इसके ऊपर है तब तक एक उम्मीद रहेगी कि मार्केट रिकवरी का टर्न दिखाए. इसके नीचे जाते ही फिर आपको लॉन्ग टर्म एवरेजेस का रीटेस्ट का चैलेंज रहेगा. तो अभी क्या करना है, जब तक 26,000 को डिसाइसिवली रिक्लेम नहीं करते तब तक सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटीज मार्केट में ढूंढना.
समझदारी है। मीन्स बेचना आना जरूरी है, राइट? बैंकिंग। सो बैंकिंग इज वन sector which despite this correction from its record high, is still holding its previous swing low. So बैंकिंग नेगेटिव नहीं हुआ है अभी तक। निफ्टी जिस तरीके से अपने प्रीवियस लो के नीचे स्लिप कर चुका है, बैंकिंग ने नहीं किया है। तो ये एक होप है अभी तक के लिए कि जब तक ये 58,700 के लेवल को बैंकिंग इंडेक्स होल्ड कर रहा है, तो मार्केट दोबारा से रिकवरी का अटेम्प्ट करेगी। क्योंकि हम सबको पता है कि अब अर्निंग सीजन की शुरुआत हो गई है, तो आईटी मेजर्स, बैंकिंग मेजर्स, रिलायंस, इन सभी के रिजल्ट्स नेक्स्ट करीब 6-7 दिन के अंदर अंदर आएंगे। नेक्स्ट वीक तो ऑब्वियसली अर्निंग पे फोकस रहेगा ही रहेगा, ग्लोबल क्रूज कैसे रहेंगे, बट लार्जली अर्निंग पे फोकस रहेगा कि अर्निंग्स किस तरीके से पैन आउट होती है अर्निंग सीजन। तो इसमें बैंकिंग के हैवी वेट्स हैं, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, उनके भी रिजल्ट्स शेड्यूल होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि 58,700 बैंकिंग इंडेक्स में अगर इस लेवल को हम होल्ड करते हैं, देन एक सस्टेनेंस, दोबारा से एक रिकवरी, उसकी पॉसिबिलिटी बनेगी। अदरवाइज आप मान के चलिए कि करेक्शन एक्सटेंड हो जाएगा। मीन्स फिर हो सकता है कि बैंकिंग ही मार्केट में प्रेशर को इंटेंसिफाई करे। ओके, सो 58,700, and then if we break, then this green line, that is 58,000 mark. Upside 60,000, 60,500 will be the zone where banking index is likely to face resistance. तो देखिए, बैंकिंग का क्लियर हो गया अपने को। इसमें 58,700 को ध्यान रखना है। जब तक इसके ऊपर है तब तक सिचुएशन ठीक है बैंकिंग के लिए कंपैरेटिवली, बट प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे भी है, तो थोड़ा सा कॉशन तो रखना ही है अपने को। और जो बड़े नाम है एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, उनके रिजल्ट्स हैं नेक्स्ट वीक, तो वो काफी हद तक डिक्टेट करेंगे कि बैंकिंग का ट्रेंड किस तरीके से आगे टाइम में प्ले आउट होगा। बट 58,700 ये आपको ध्यान रखना है बस। लेट्स टॉक अबाउट स्टॉक्स दैट यू शुड बी फोकसिंग ऑन in the coming week, considering the market scenario. So last week, if you remember, that apart from the key performing sector, that is banking, auto, and metals, we discussed about pharma, healthcare, and reality also. So while reality is still failed to show any kind of meaningful recovery, pharma definitely has showed strength and witnessed decent traction amid this negativity and choppiness. So Divi's Lab, one of the most consistent performer within the pharma space. As you can see that here also we saw sharp swings, volatile swings in the recent month, but it could manage to hold this consolidation zone, a kind of a symmetrical pattern. And now we are again set for a recovery. So while the markets were down, it ended with a decent gains of 3% on week basis. तो देखिए, जब मार्केट में स्ट्रगल होता है तो यूजुअली, नॉट हमेशा, बट यूजुअली आपको डिफेंसिव्स में कौन कौन आता है? डिफेंसिव में फार्मा, एफएमसीजी, ये सभी आते हैं। तो वहां पे आपको कुछ बाइंग इंटरेस्ट, स्टेबिलिटी कंपैरेटिवली रेट सेंसिटिव से ज्यादा वो देखने को मिलती है। तो इस बार भी कुछ अलग नहीं है कि फार्मा एज अ बास्केट, इसमें से कुछ एक काउंटर्स तो बहुत अच्छा परफॉर्म किए, कुछ में थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग जरूर आई, डिक्लाइन भी आया, बट लार्जली आपने सेक्टर को पॉजिटिव टोन के साथ ज्यादातर ट्रेड होते हुए देखा, जिसमें से कि डिविज लैब एक ऐसा नाम है जो कि अपने
कंसोलिडेशन को अब दोबारा से एंड करके अप ट्रेंड को रिज्यूम करने की कोशिश करने के लिए अब इंडिकेशन दे रहा है, राइट। सो यहाँ पे कंफर्मेशन कब आएगा? जब 6800 के मार्क को हम ब्रेक कर देंगे तो फिर एक नए हाइस की तरफ आपको डिविज लैब बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, राइट। Next on the list, again, a stock from the pharma space, because see, it's important to identify the right set of stock in the right sector, especially in the market like this, wherein we are seeing sharp declines across the board. So instead of catching the falling knives, the prudent approach is to focus on sectors which are showing strength amid this correction, so that in case if the market continues its correction, at least the damage on those sectors or themes or stocks could be limited. Means it's not that they will be completely immune to the fall, but yeah, there'll be less or comparatively less decline in pharma space. That's the reason why we are seeing Lupin also performing well during this week. So as you can see that roughly around 4% kind of a gains with decent uptick in volumes in the last 3 weeks. So this all bodes well for a consistent up move in the coming week as well. So Lupin पे आप फोकस कर सकते हैं alongside with Divis. तो देखिए यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कंफर्टेबल नहीं है शॉर्ट साइड पे फॉर एनी रीजन कि लॉट साइजेस, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, ये सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, देन फोकस ऑन जहाँ पे कि कम वोलेटिलिटी के साथ आप ट्रेड कर पाए। तो फार्मा उसमें से एक ऐसा स्पेस अभी है जहाँ पे कि एक्सपेक्टेड है कि एक तो डाउन साइड पे वो पार्टिसिपेट ज्यादा ना करे, मींस करेक्शन अगर आती है तो फिर वो कंपैरेटिवली कम गिरे, राइट। और उसके बाद रिकवरी में भी शायद कि आउट परफॉर्म करे और रिकवरी भी कंटिन्यू रहे। डिविस लैब, लिपिन, ये दो नाम। Lastly on the list, stock which was trading in a very tight range. So of late, if you remember that in the last two webinars, we discussed about some of these names from the energy basket, Coal India, NTPC on the performer side. So Coal India has done exceptionally well. It's still holding strong. Then NTPC after this sharp surge last week witnessed marginal correction. But Tata Power, which was trading in a very tight band, has witnessed the range breakdown. So this is self-explanatory कि एक टाइट रेंज में ये ट्रेड कर रहा था टाटा पावर काफी टाइम से। पास्ट में जब ये रिकॉर्ड हाइस पे था तब उस तरीके से चीजें पैन आउट हुई थी कि जब ये डिक्लाइन आया था उसके बाद ये करेक्शन, सेम उसी तरीके का एक बड़ा कैंडल, रेड कैंडल जो इस रेंज को इसमें ट्रेड कर रहा था उसको ब्रेक कर दिया है इसने। तो अब क्या पॉसिबिलिटी दिखती है कि आने वाले टाइम में करेक्शन एक्सटेंड हो 340 320 जो कि मेजर सपोर्ट्स हैं इसके, उसकी तरफ शायद ये स्टॉक बढ़ता हुआ नजर आए, राइट। सो नेगेटिविटी और विद इन द सेक्टर also you might see some of these stocks holding well, inching higher, and which is normal during the earning season. तो अर्निंग के टाइम पे बेसिकली इस तरीके के डाइवर्ज मूव आपको हो सकता नजर आए कि एनर्जी स्पेस में से ही कुछ एक काउंटर्स हैं कि जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। क्यों? या तो अर्निंग की एक्सपेक्टेशन अच्छी है या फिर अर्निंग्स एक्चुअल में अच्छी आई हैं, और कुछ जिनमें एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी या नहीं हो पाया फॉर सम रीजन और दी अदर, तो करेक्शन आया। तो यहाँ पे अभी टाटा पावर में इंडिकेशन है कि ये करेक्शन एक्सटेंड हो सकती है आफ्टर दिस ब्रेकडाउन। सो just to sum it up, Nifty banking index, Nifty looks comparatively weaker. 25,600 is the make or break area for the next week. If we manage to hold, good. If we cross 26,000, excellent. Then this negative view would negate completely.
If we fail to hold 25,600, then 300, 150 on the downside. So we have very clear texture, means 25,600 के ऊपर का एक अलग दुनिया है, नीचे का अलग दुनिया है. Banking index 58,700, that's the make or break area. जब तक उसके ऊपर हैं तब तक सब कुछ ठीक है, उसके नीचे गए प्रॉब्लम बढ़ जाएगी. Focus area would be more of domestic clues now, means earnings, heavyweight के earning, and of course global clues जो basically बीच बीच में चल रहा है, चाहे जियोपॉलिटिकल हो या फिर यूएस मार्केट की तरफ से टैरिफ रिलेटेड जो अनसर्टेनिटी है, that will continue to be on your radar as well. Amid this strength, Davis Lab, Lupin in the pharma space, Tata Power in the energy basket, which looks weak to us. Right, so this is all from the presentation. So let's now do a quick feedback poll. I just need to see where is the option. Yeah. So please fill in your feedback. अपना जो भी फीडबैक अपना शेयर करिए, और उसके बाद अपने जो भी सवाल हैं, क्वेश्चन मार्क करके एक बटन होगा Q&A, उसमें आप लिखकर अपना सवाल पूछ सकते हैं. जो भी सवाल है वो आप पूछ सकते हैं. In case if you have any question, post this feedback, you can use that, click that Q&A button. वो मोर के अंदर होगा या फिर आपके स्क्रीन पे सामने ही दिख रहा होगा. Just click that and write your question. Those who are done with the feedback, they can start posting their questions. जिन जिनका फीडबैक हो गया है वो अपना सवाल लिखकर अपना पूछना शुरू कर सकते हैं. Okay, let's start now the Q&A. Okay, so we have more of stock specific questions as of now. So, okay, Snehansh has this question on how America affects India. So, Snehansh, what I understand from your query is that it is related to the recent event, that why we are hearing so much that US tariff and all. So basically, it's more about taxes, right? If you see the scenario pre this tariff regime, situation was different. Means we were having decent export to US in comparison to the import. So that gives us extra money in our hand. But why we could do that? Because the taxations were low. After this 50% of tariff, situation has changed. And not only that, this tariff related situation has cautioned investors also, especially the foreign investors, toward India. And that's the reason why we are not seeing sustained buying from the FIIs. Of course, that is not the only reason, because the valuation, earnings, they are the major factors.
But this is one of the factor which influence the investors' outlook towards a country. So this equation, in case if we fail to see a trade deal, then this challenge might linger for again maybe 3 months, 6 months. So that might continue to keep the FIIs at bay, provided if the earning turns the table. अगर अर्निंग्स अच्छी आनी शुरू हो जाती है तो शायद फिर सिचुएशन चेंज हो जाए कि आपका टेरिफ रिलेटेड जो चैलेंजेस हैं मार्केट का, उसको मार्केट फोकस ना करते हुए इस पे फोकस करेगी कि हाँ भाई अब अर्निंग्स आ रही हैं, लेट्स इन्वेस्ट. बट अगर वो नहीं होता है तो फिर ये सारे फैक्टर्स कि अमेरिका क्या कह रहा है, किस तरीके की टैरिफ की बात हो रही है, वो सब चीजें फोकस में रहेंगी. ओके. Okay, Gaurang has this question. Sir, what's your view on budget and which sectors to focus on? So basically, Gaurang, in the last two budgets, government have made like multiple changes on personal income tax front, indirect taxes front, means during the year itself. Then other measures to support industries, boost the uh, startup ecosystem and all. But now, with limitation on fiscal side, means they have to maintain the fiscal discipline. I feel that this time around it's going to be selective support to the sectors. So export is one sector which due to tariff has impacted. So that may remain in focus, right? So this is something, but again, it's very, very difficult to time, these talks, because usually the moves happens before the budget. बजट से पहले ही मूव हो जाता है तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट लाइक किसको हम कैसे टाइम करें. बट एक्सपोर्ट डेफिनेटली शुड बी ऑन योर रडार. देन selectively some of these stocks from the infra basket which also sees buzz. Of late we have seen sharp correction in some of those counters. Defense is one sector which will remain in focus, but rest I feel is going to be very selective. I would say announcements. So don't expect much from the budget is what I suggest, considering that the major things which government could plan, they have already announced. And now with limited money in disposal, it's difficult to make any big bang announcement. But export, defense, and selectively from the infra space is something that you can focus on. Okay, so some of these stock specific queries now. So first we have Tariq Khan ji has this question on Gale. So he has purchased Gale and now the stock is down. So see, if you have this for investment, then price should not be the only criteria. Means at times, we do see that even investors can consider a certain percentage of deterioration in the
initial investment price to ascertain the stop losses, but the major focus should be on the reason why you bought it at first place, why you made those investment. If the investment rationally has negated, irrespective of price, you should exit. But if they are still in place and market is witnessing this correction, and because of that, in case if the stock is coming down, then it's a different issue. In fact, so that should be considered as a buying opportunity. So my suggestion is that in case if you have bought it for trading and now you are stuck and feel that I should turn this into investment, that's not the right approach. Because a 10 rupee loss can convert to 50, 100, whatever. Right? So in case if you bought it for trading, take the positions accordingly. If you have bought it for investment, the rationale should be in place. For GAIL specifically, the trend looks down to us, is what the indications are. Means now the next major support comes around 158.59 level, the previous swing lows, and then around 152. In case if there'll be any bounce, 168, 170 will be the strong hurdle area. So hope it answers your query. Okay, next. ITC, Sai Vishnu has this question, whether we should hold, buy or sell. So like what we've shared during the presentation itself, that some of these heavyweights like ITC, HDFC Bank, Reliance Industries, means monthly, on the monthly basis, ITC is down 16%, right? And this zone 335, 337 is what we have as immediate support, which it currently holding somehow. So if the view is short term, I would not recommend you to hold without stop losses. Means your stop should be at 334, and in case if it sees any bounce, you should consider trailing your stop losses and rise. If you have made investment long term, then you may consider this as a buying opportunity, or rather you can wait for the earning announcement to happen and then take a call, right? These are the two ways that you can handle your position. Okay, what about mid cap and small cap? So again, since we are entering into the earning season, the ideal approach is to keep a check on your high beta counters, because usually the volatility remains high, right? So for Nifty mid cap, after this decline 58,800, so it's quoting at 58, 59,700, 5800, 58,000 will be the zone to watch out for. Mid cap still looks comparatively better. Small cap may result in further decline or sharp decline in the coming session. So avoid aggressive positioning in small cap or adding to your loss making position, which is very important. Okay. Okay, Praveen has this question on silver bees and gold bees. So I understand, Praveen, because while the equity markets are struggling, this bullion, they have done exceptionally well, in the recent past. And so, like, how we trade or invest into bullions, see the underlying, that should be the criteria. Means how the gold is performing, how the silver is performing. Basis that we take a clue at how this ETFs can perform. At times you see them on premium, at times you see them on discount. So as of now, while the trend is still up, for gold bees, let's say, positionally we are seeing this level 108, which is 5 points down from the current area, being the immediate support.
So as long as we are holding above this mark, you can continue to hold your position and keep on trailing your stop losses on rise if the view is short term. For silver bees, it's highly volatile as of now, and 210 is the immediate base, while 240.45 is the resistance zone. So as of now, the risk to reward for fresh buying is negative. It's not favorable. So either you can wait for a dip towards 210 or a breakout above 245, not in between. Okay. Santhanawal has this question on Dixon and ITC. So ITC, we have anyways discussed, Santhanawal, so you can continue to hold as per the recommended level 335, the view is short term. Dixon also, after this sharp correction, we are seeing a bit of a breather, but not a very strong indication of recovery yet. Means 12,500. That's the strong hurdle area. If we manage to cross this, then we are set for a recovery towards 13,500 or 14,000 mark. Otherwise, this may continue to trade lackluster. For existing position, 11,500 is zone basically where we have the immediate support. Okay, so I guess with this we have answered all the queries. Yes. So thank you everyone for joining in. Next week, same time, same place, we'll connect again. Till then, take care. Thank you.